बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 15 नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स से है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ज़रूर एक बात शेयर करूंगा कि आप लोगों के पास बेटा बुक्स होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आप लोग अपने पास रखेंगे ताकि जब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ें, इसके क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करें तो आप लोग अच्छे तरीके से उनको नोट डाउन कर लें। साथ ही उनके सिनोनिम्स भी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 15 है नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसके बेटा नाम को आप लोगों ने लिख लेना है। जो हमने इसका नाम रखा है वो है रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स ने रिजाइन कर दिया था अपनी जॉब से। कब किया, कैसे किया, तो इसके मुतालिक है। इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो भी मैंने लिख दिए हैं। पहले हम चैप्टर को स्टडी कर लेंगे, फिर इससे मुतालिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा बुक्स आप लोगों के पास ओपन हो, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 15। And once on a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lower fourth in Latin. Chips जो है क्लास ले रहा था, तो एयर रेड फजाई हमले की जो है ना वो एक अनाउंसमेंट हुई थी। फजाई हमले की वार्निंग जो है वो दी गई थी। The guns began almost instantly, and as there was plenty of shrapnel falling about outside. Shrapnel हम कहेंगे बुलेट्स को, गोलियां। It seemed to Chips that they might just as well stay where they were, on the ground floor of schoolhouse. It was pretty solidly built and made as good a dugout as Brookfield could offer. Dugout कहते हैं ट्रेंच को, खंदक, dugout, ट्रेंच, इसके लिए TRENCH, ट्रेंच, खंदक, dugout, खंदक, इसके लिए हम लिख लेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा इसे। And as for a direct hit, well, they could not expect to survive that wherever they were. So he went on with his Latin, speaking a little louder amidst the reverberating crashes, reverberating gungna, echo, gungna, crashes of the guns and the shrill whine of anti-aircraft shells. Some of the boys were nervous, few were able to be attentive. He said gently, "It may possible seem to you, Robertson, at the particular moment in the world's history of that the affairs of Caesar in Gaul some 2000 years ago are of somewhat secondary importance, and that the irregular conjugation of the verb tolo, conjugation गर्दान को कहते हैं, word tolo से related, even less important still. But believe me, my dear Robertson, that is not really the case. Just then there came a particularly loud explosion quite near. You cannot judge the importance of things. चीजों की अहमियत को तुम जज नहीं कर सकते by the noise they make. Oh dear me, no, a little chuckle. थोड़ी सी एक दबी दबी सी हंसी थी। चौकल जो है वो हम हंसी को कहते हैं, दबी दबी सी हंसी। And these things that have mattered for thousands of years are not going to be snuffed out because some stink merchant in his laboratory, stink merchants scientists को कहते हैं, in his laboratory invents a new kind of mischief, titters of nervous slaughter for Burrow, the pale, lean and medically unfit science master was nicknamed the stink merchant. जो है वो यहाँ पर चिप्स जो है उनको, जो कि ये फ़ज़ाई हमले करते हैं और जो ये बनाते हैं इस तरह के फ़ज़ाई जो वेपन्स हैं बनाते हैं, तो उनको उसने कहा है कि दे आर स्टिंक मर्चेंट्स, वो बदबूदार ताजिर हैं। अनदर एक्सप्लोजन नियर स्टिल, और फिर एक और धमाका होता है। लेट अस रिज्यूम आवर वर्क, इफ इट इज़ फेट दैट वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवरसेल्व्स इन समथिंग। अब चिप्स जो है उन एयर रेड के दौरान, फजाई हमलों के दौरान, उसने अपने बच्चों को अपने उस लेक्चर में अटेंटिव रखा हुआ था ताकि उनको डर और खौफ ना हो, और चिप्स ने क्लास भी ली थी। Really appropriate. Is there anyone who will voluntarily to construe? Construe जो है उसका मतलब होता है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना, construe। voluntarily अपनी मर्जी से जो काम करे उसको voluntarily कहा जाता है। Mannered, chubby,
Dauntless, courageous, chubby, fat, mota, clever, and impudent, said, I will, sir. Very good. Turn to page 40 and begin at the bottom line. The experience still continued deafeningly बहरा कर देने वाले जोरदार धमाके थे. The whole building shook as if it were being lifted off its foundations. Maynard found the page, which was some way ahead, and began shrilly. Genus Bocat Punga. ये Latin lines हैं. This was the kind of fight, Cosi Germany, excurrent, in which Germans business besides themselves. Oh, sir, that's good. That's really a very funny indeed, sir. One of your very best. Laughing began, and Chips added, well, off you can see now that these dead languages can come to life again sometimes. Afterwards, they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield, the nearest of them just outside the school grounds. 9 persons had been killed. 9 लोग जो थे उस जंग में मारे गए थे. The story was told, retold, embellished. The dear old boy never turned a hair. Even found some old tag proverb को कहते हैं, quotation to illustrate what was going on. Something in Kessel about the way the Germans fought. You would not think there were things like that in Kessel, would you? And the way which Chips laughed, you know the way he does laugh, the tears all running down his face. Never seen him laugh so much. He was a legend, famous person. Legend, वो एक मशहूर शख्स था. With his old and tattered gown, his walk that was just beginning to break into a stumble, his mild eyes peering over the steel-rimmed spectacle, and his quaintly humorous sayings, Brookfield would not have had an atom of his different. November 11, 1918. और ये पहली जंग अजीम का इख्तिताम था नवंबर 1918. News came through in the morning. A whole holiday was decreed for the school, and the kitchen staff were implored to provide as cheerful a spread as wartime rationing permitted. There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall. When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush. Hush, silence को कहते हैं, खामोशी. And then wave upon wave of cheering. Everyone gazed on him with eager, shining eyes as on a symbol of victory. He walked to the dais, seeing as if he wished to speak. They made silence for him, but he shook his head after a moment, smiled, and walked away again. It had been a damp, foggy day, and the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. The next day he was in bed with bronchitis and stayed there till after Christmas. But already on November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent in his resignation to the Board of Governors. और उसने Board of Governors को अपना resignation दे दिया था. When school reassembled after the holidays, he was back at Mrs. Wickett's. At his own request, there were no more farewells or presentations. Nothing but a handshake with his successor and the word acting crossed out on official stationery. The duration was over. और उसका टाइम यहाँ पे क्या था, खत्म हो चुका था. नेक्स्ट चैप्टर 16 है बेटा. उससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 15 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बताऊंगा. तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ चिप्स ड्यूरिंग द एयर रेड. फजाई हमलों के दरमियान चिप्स का रिएक्शन क्या था, चिप्स का बिहेवियर क्या था. यहाँ पे हमने बिहेवियर की बात की है, इधर रिएक्शन भी आ सकता है, तो आप लोगों ने उसको भी याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पर्सन्स किल्ड ड्यूरिंग एयर रेड. तो 9 people killed, 9 persons were killed. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड चिप्स कंटिन्यू हिज जॉब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. नो, उसने कंटिन्यू ना रखी थी क्योंकि उसने जो है वो रिजाइन दे दिया था. क्वेश्चन 4 है, व्हेन डिड चिप्स सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. 11 नवंबर थी जब उसने रेजिग्नेशन भिजवाया था. क्वेश्चन 5 है, डिड चिप्स कंटिन्यू हिज क्लास ड्यूरिंग द एयर रेड्स. यस, he had continued his class during the air raid. और एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख ना सका, who were
स्टिंकिंग मर्चेंट्स, स्टिंकिंग मर्चेंट्स, यानी स्टिंकिंग मर्चेंट्स जो हैं वो कौन है? चिप्स के मुताबिक कि हु वर स्टिंकिंग मर्चेंट्स, दोज पर्सन्स हु मेड द डेंजरस वेपन्स ऑफ वॉर कॉल्ड स्टिंकिंग मर्चेंट्स। वो क्या है? बदबूदार ताजिर हैं। तो चिप्स जो है उनके मुतालिक इस तरह के व्यूज रखता था। तो बेटा चैप्टर नंबर 15 आप लोगों का यहाँ पे कवर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए आप लोगों ने सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।